building LinkedIn network. Yeah, this is the most important thing. LinkedIn पे हम लोग जाते क्यों हैं? नेटवर्क बिल्ड करने. तो सपोज आपने प्रोफाइल बिल्ड कर लिया एंड यू नॉट कनेक्टिंग विद द राइट पीपल. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट प्रोफाइल? So if you do not have at least 500 connections, start sending requests to other people. So a lot of people have mentioned that they have less than 500 connections. So guys, you have to start sending requests to other people. ठीक है? तो at least 500 connections रखो, उसके ऊपर ही रखो. I would recommend like 1000, 2000. जितना ज़्यादा उतना अच्छा, because it's your professional network. But at least 500 तो होना चाहिए, right? And you have to follow industry influencers and company pages. So company pages को follow करने में कुछ नहीं जाता तुम्हारा, ठीक है? तो कहीं पे यहाँ पे Instagram तो है नहीं कि तुम्हें मतलब you have to be shy that okay मैं किसको follow कर रहा हूँ. तो वहाँ पे you have to follow all the relevant pages that are important for you. Follow all those companies. कभी वहाँ पे job, internships, कुछ और भी event होते हैं. So you'll get updated about those things. And follow influencers so that people who are relevant to your industry, to your domain, if they're putting something, so you'll get to know about that. And engage in LinkedIn communities, right? So there are various groups that are on LinkedIn. You can be a part of those groups. You can be a part of not just groups. In fact, you can comment on other people's LinkedIn post and engage with other people. That way, suppose if you're even commenting on some third person's post, so that way that person would feel like, okay, uh, maybe I can, connect with this person. So suppose if I've posted something on LinkedIn about AI, right? And if I'm working on some AI project and someone tells me that, okay, I liked your post and this is something that I do, and maybe we can connect. So I might accept his connection request, right? So that way we can get to build better connections on LinkedIn. We get relevant people. So comments में सही तुम्हें लोग मिल जाते हैं, तुम्हें ग्रुप्स में लोग मिल जाते हैं, रैंडम लोग तुम गूगल पे वहां पे मतलब लिंक्डइन पे सर्च कर करके किसको ढूंढ लोगे? थोड़ा बहुत यू कैन फाइंड आउट, बट the more people you have in your connections list, unke through you get to know various other people, right? And you have to share your own original content regularly so that people can engage with it and you can get more connection request. Initially, जब तुम्हारे पास 500 connections भी नहीं होते, तब तो तुम्हें request भेजनी पड़ती है. Later on, if you have those many connections, people will start sending requests to you. ठीक है? तुम्हें भी भेजनी है, but you'll start getting requests as well. And then utilize LinkedIn events and attend various virtual webinars like you're attending today. And join LinkedIn groups, provide value to others. Great. Ayush, next. ठीक है. So ये कुछ recommendations हैं. This is a screenshot of my profile. So this way you have to get some recommendations from relevant people in your industry. Like if you can see that Gaurav Chaudhary जो है, he's a CXO at like Salasar करके, there's an insurance broking firm. So which is one of the largest insurance broking companies in India. So उनके chief business officer ने मुझे recommend करा है. Why? Because I used to work with him in Marsh. So Marsh is rank 1 for insurance broking. So when I used to have a corporate job like some years ago, so Gaurav used to be the president of that organization. So getting a recommendation from him is something that will boost my LinkedIn profile. Meda was my colleague. Milind is currently the vice president of the same company. Smita Sharma, she was the chairperson of the MBA college that I went to, right? So getting relevant LinkedIn recommendations is also going to boost your profiles. So ask the people that you work with. Suppose if you're having an internship, so ask the founder of that startup, or if it's a large organization, so ask your manager or maybe someone senior in your organization to give you a LinkedIn recommendation. You can even ask your colleagues to do that. In fact, there's no harm in getting recommendations from anyone. For example, even people who are junior to you, they can give you a recommendation on LinkedIn because that builds trust that okay, this person is good, right? So even suppose if I know you personally, I can give you a recommendation, or like you guys are attending this webinar. So if anyone feels that I've added value to you, you can also go there and add a LinkedIn recommendation about me. So like it can go both ways, right? And on the right hand side, you can see endorsements. So as I mentioned, there are various skills mentioned on my profile. So if you can see that there are 9 endorsements, 11 endorsements, 10 endorsements. So this is how you build credibility that okay, this person knows these skills. अब यहाँ पे खाली skills mention नहीं है, लोगों ने endorse भी करा है. ठीक है, आयुष, next.
Yeah, take it to the top. Okay, great. So there are good things that I would like to say about Anushka's profile. The first one is that she has mentioned that she's open to work. This way, when someone comes to her profile, they get to know that, okay, she's looking for a job or an internship. सेकंड थिंग अनुष्का ने यहाँ पे अपना जो एक गलत चीज करी है लाइक गलत नहीं मतलब इट्स समथिंग रिपीटेटिव अनुष्का लाइक यू मेंशनड योर नेम अगेन इन द बैनर right? So your name is already mentioned on a profile which is highlighted, like it's in bold. So you're mentioning something in a repetitive form in your banner that is useless. The good thing is that you mentioned that you're an English teacher. You mentioned the email ID, which is good that people can connect with you. And you mentioned things like aspiring school teacher, online tutor, and educator. Good. Even you have uploaded a photograph where you're teaching. Amazing. So you can remove your name, and instead of writing your name, you can write something in a sentence form like what you're doing, right? So that would create more impact because आपका name already वहां पर आ रहा है, राइट? नीचे चलते हैं थोड़ा सा स्लोली आयुष। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, अनुष्का की प्रोफाइल पिक्चर नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे, राइट? ये एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो लग रही है। So Anushka, you have to upload a professional photograph on LinkedIn. Next thing, aspiring teacher, educator, online tutor, good. You can even upload some write some hashtags. वहाँ पे option आता है where you can mention things what are relevant for you. ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट आपके बहुत कम कनेक्शन है, यू हैव जस्ट 145 कनेक्शन, सो यू हैव टू गो पास 500 एटलीस्ट। आयुष गो डाउन, अबाउट सेक्शन ओपन करना। अबाउट सेक्शन बहुत छोटा है, ठीक है। एजुकेशनल एबिलिटी टू लिसन ऑलमोस्ट एनीवन। See, you not even mentioned things about you in the about section. You've mentioned a random quote. So that is not good. So you have to mention things about you. अब यहाँ पे what you can do is you can leverage AI. Chat GPT के पास जाके you can if you not use ChatGPT, just try that. It's a good tool. वहाँ पे जाओ, tell it about yourself and tell it that you want to write an about section for you. ठीक है? तो वहाँ से get some good about section written for you. Because ये बहुत छोटा है and it's not even relevant. ठीक है? In just one sentence you mentioned I'm a passionate teacher currently pursuing B.Ed, firmly believing it. So नहीं मजा आ रहा, right? So get it written by ChatGPT and tell it more details to the AI tool to get you, help in building a better about section. ठीक है आयुष, नीचे जाओ। Featured, very great, good. So featured section is there on LinkedIn where you can upload various things where you get featured. For example, she has been uploaded a certificate. Likewise, you can upload various other things like if any website mentions you or any news article mentions you or anything any other LinkedIn page mentions you or something mentions you. So you can get that like in the featured section of your LinkedIn profile. So that way also people get to know that this person is doing something great. ठीक है आयुष, नीचे जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। रुको आयुष, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन में इफ वी नोट, आई नो अ लॉट ऑफ यू, अब यहाँ पे सब फटाफट से यस बताना किस किस ने अपने एक्सपीरियंस के अंदर अपने एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन मेंशन करा है। इफ यू हैव, राइट यस। इफ यू हैव नॉट मेंशन डिस्क्रिप्शन, जस्ट लाइक शी हैज नॉट मेंशन एनी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे खाली परसुइंग बीएड एंड डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दैट्स इट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है। So if you have not done that, write no in the chat box. If you have mentioned description, just write yes in the chat box. अब यहाँ पे ये not. See, this is also another problem that we face because when we upload things like our experience, our educational background, अब यहाँ पे education में भी वहाँ पे mention नहीं है details. Like what all things have you learned during your education? अब काफी चीजें standard होती हैं, but there are other things that you learn during your undergrad or postgrad that are different. Like if you are a part of some society or if you are part of maybe some clubs or maybe some given some responsibilities like if you are a prefect in school or if you are a part of the placement cell in your college, so these things give an impression that you've taken position of responsibility. So you can mention that, you can mention other things that you've learned during your college days. ठीक है आयुष, नीचे जाओ। अभी मैं इसका अपनी प्रोफाइल खोल के भी एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे उसको लिखते हैं। लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस, ग्रेट, ठीक है, जाते जाओ।
अब यहाँ पे इसकी प्रोफाइल में मुझे कहीं पे स्किल्स नहीं दिखे। अनुष्का ने स्किल्स मेंशन नहीं करे हैं, एंडोर्स करना दूर की बात है। रिकमेंडेशंस हैं आयुष? और योर स्क्रीन हैज़ फ्रोज़न। नीचे जाते हो, स्किल्स आ गया। ओके, स्किल्स हैं, ठीक है, स्किल्स नीचे थे। ग्रेट। सो शी हैज़ मेंशन्ड 46 स्किल्स, ग्रेट। इसको एक बार ओपन करना आयुष स्किल्स को। Anushka, get your skills endorsed as well. Like other people who feel that you're good at these things, ask them to endorse you. That way you'll be building credibility. Just mention karna is not enough. Go back, Ayush. Languages, great. Interest, ठीक है. Interest में see you're just following Ankur Wari को. Add more people. Companies पे click करो. See, okay, you're following about 19 companies. You need to follow more top voices, follow more companies, follow more groups. जितने ज़्यादा लोगों को फॉलो करोगे उतना कंटेंट तुम्हें लिंक्डइन पे रेलेवेंट मिलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे रिकमेंडेशन सेक्शन अपना ऐड करो। आस्क पीपल हु आर who you've worked with prior to joining this webinar, like suppose you're the chairperson of your university, or maybe some senior person in the organization that you're working in. So ask them to give you a recommendation. That way your profile will stand out. ठीक है, आयुष नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन कर लो मयंक की, एंड देयर इज अ थर्ड पर्सन, आई गेस अक्षिता की तो ओपन नहीं हुई। सो अनुश्री हैज शेयर्ड हर प्रोफाइल लिंक, वो ट्राई करेंगे इसके बाद। आयुष की प्रोफाइल में 100 गलतियां। यस सर। आयुष की प्रोफाइल में भी इतने एरर्स हैं, अभी मैंने समझाए भी थे। सर मैं इनकी ओपन कर रहा हूँ। ये मयंक की थी? अच्छा, आई थॉट इट वाज योर प्रोफाइल। ठीक है ठीक है, अग्रवाल से मैंने पढ़ा, मैंने, ओके सॉरी। ठीक है, मयंक की प्रोफाइल में ओके, द गुड थिंग इज दैट ही इज वेयरिंग अ सूट। द बैड थिंग इज दैट बैकग्राउंड प्रोफेशनल नहीं लग रहा। तो बैकग्राउंड उसका बैंक, यू हैव टू हैव अ बेटर बैकग्राउंड, मोर क्लियर फोटोग्राफ, थोड़ा सा क्लोजअप में क्लिक करो उसे। एंड देयर इज नो बैनर। अभी जैसे अनुष्का की प्रोफाइल में मैंने शो करा, आई गिव सम अदर सैंपल्स, लाइक अदर एग्जांपल्स एज वेल। सो यू शुड हैव अ बैनर व्हिच शोज something that you are doing, something that you're pursuing, something that is relevant for other people who come to your profile. ठीक है, इंटर्न चला स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम, अब इससे क्या पता चला? कुछ पता नहीं चला, ठीक है? तो यहाँ पे राइट अबाउट अदर इंटर्नशिप्स और लाइक द कॉलेज दैट यू आर इन, सो मेंशन थिंग्स ओवर देयर। सो व्हेन समवन कम्स टू प्रोफाइल, वो टॉप सेक्शन में कुछ है ही नहीं, खाली है, 22 22 कनेक्शंस, कुछ भी नहीं है। नीचे जाओ आयुष। जाते हो, कुछ नहीं यहाँ पे, एक्टिविटी नहीं, स्किप नीचे, एक्सपीरियंस पे आ जाओ। या अब एक्सपीरियंस में भी यहाँ पे लाइक यू मेंशन इंटर्नशाला स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम, बट व्हाट ऑल थिंग्स that you learned at internshala, you can mention that in the description, यहीं पे साथ में। That way someone who comes to your profile, he'll get to know that okay, you know all these things. अब यहाँ पे स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम में कई चीजें होती हैं, तुमने क्या करा, तुमने क्या सीखा, वो रेलिवेंट है ना मेरे लिए। तो मतलब सिर्फ ये मेंशन कर देना, इट्स लाइक अ वेरी वेग स्टेटमेंट। इंटर्नशाला स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम, लाइक वो क्या था, क्या क्या सीखा उसमें, कुछ पता नहीं चल रहा वहाँ पे। रामजस कॉलेज, बैचलर्स डिग्री बीकॉम, ठीक है बीकॉम तुमने करा, लेकिन बीकॉम में तो देयर आर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग। सो नाउ इज इट ओपनिंग? किसका मैसेज आया? अक्षिता। अक्षिता एक बार ट्राई करेंगे इसके बाद, अभी मयंक की प्रोफाइल के बाद ना वील ट्राई और लिंक इस बार। सो ठीक है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, तो मेंशन द डिस्क्रिप्शन। जहाँ पे कोई भी सोसाइटीज का, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, जस्ट मेंशन दैट। एंड any other things that you learned, any subjects that you were good at, mention all those things. Skills can 38 skills, great। अब जहाँ पे endorse करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मे बी हो सकता है because you and Ayush are a connection, so likewise Ayush can endorse you for those skills, other people can endorse you, so वैसे get people to endorse you for these skills।
नीचे जाओ आयुष। इंटरेस्ट अब यहाँ पे थी, रिकमेंडेशंस यहाँ पे भी नहीं है। अभी बहुत चीजें और भी कम होंगी, आई शो इट ऑन माय प्रोफाइल। आयुष एक बार अक्षता का ट्राई कर लो, इफ इट ओपन्स ग्रेट, नहीं तो फिर विल ट्राई विद अनुश्री's प्रोफाइल। सो ये थर्ड एंड लास्ट है। अक्षता का ओपन हो गया ना, ठीक है। या वील जस्ट गो थ्रू 3 प्रोफाइल्स एंड देन आई शो यू माय प्रोफाइल। वर्क ऑन यू फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ समझ नहीं आया मुझे, बहुत एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अक्षता की प्रोफाइल फोटोग्राफ ही नहीं है, विच इज वेरी बैड। यूपीएस देहरादून ओके, पीजीडीएम ओके, एटलीस्ट शी इज अ स्टूडेंट। मुझे कहाँ पे कॉलेज में क्या कर रही है वो दिख गया, यहाँ से जिम्स दिख गया, ग्रेट। सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस डोमेन, ग्रेट। अब ये about like the header section that she's mentioned the details about her, these are good, but profile picture very bad, banner section very bad, कनेक्शंस बिल्कुल नहीं है। 153 कनेक्शंस बहुत कम होते हैं, गेट 500 कनेक्शंस। सो ऊपर का सेक्शन बहुत, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। प्रोफाइल लाइक द डिस्क्रिप्शन इज फाइन, बाकी इमेजेस पे यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड कनेक्शंस एज वेल। नीचे जाओ आयुष, अबाउट सेक्शन ओपन करो। आई गेस मयंक का अबाउट सेक्शन में नहीं था। The about section, highly organized and detail oriented. I'm a graduate student with passion for finance with solid foundation in BCom honors. I have developed a range of professional skills, including financial analysis, data interpretation. Um, ठीक है, ठीक है। Seems fine, but इसको थोड़ा सा और improve कर सकते हो. Write more things that are uh, giving insights कि तुम what do you want to do in your career, उससे related थोड़ा सा 2-3 लाइनें just add it more. But it's fine that you're giving an impression what all you're doing and what are you good at. Education में you need to add the description जो भी मैंने बाकी दोनों profiles में बताया। नीचे जाओ, volunteering में भी आयुष नीचे, volunteering में भी description add करो, licenses नीचे 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 जल्दी जल्दी, सेम सेम मिस्टेक्स हैं इसमें, अब टाइम अब वो नहीं करेंगे, लाइक चलो सेम है, रेपिटेटिव हो रहा है, पर अब जल्दी नीचे जाते हो जल्दी जल्दी। प्रोजेक्ट्स गुड, प्रोजेक्ट्स किसी ने मेंशन नहीं करे थे अभी तक। शी इज मेंशन प्रोजेक्ट्स व्हिच इज अ गुड थिंग। स्किल्स ग्रेट, शी इज मेंशनड। अब उसके एंडोर्समेंट्स भी उसने करी है नहीं करी, आई डोंट नो। गेट योर स्किल्स एंडोर्स, नीचे जाओ आयुष, ठीक है। 15 स्किल्स ग्रेट, मेंशन ट्राई टू मेंशन मोर। आयुष नीचे जाओ, ठीक है। रिकमेंडेशंस यहाँ भी नहीं है, ठीक है। वशिश अभी हम और नहीं करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑन 3 प्रोफाइल्स एंड दिस इज द लास्ट वन। अभी मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करता हूँ, आई जस्ट ओपन माय प्रोफाइल। उसमें देखिए आई एडेड सम मोर थिंग्स जो इट माइट बी मिसिंग इन अदर प्रोफाइल्स, सो वहां से सारे सेक्शंस अभी कवर हो जाएंगे फटाफट से, ठीक है। सो सी द बैनर, इफ यू कैन गो, इफ यू लुक एट द बैनर, सो यहाँ पे सारे वो लोगोज हैं। एनी टाइम अक्षता, ग्रेट। सो अब यहाँ पे बैनर में क्या है, बैनर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, आई हैव मेंशन्ड अ सिंगल सेंटेंस, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स फॉर सक्सेस इन अ डिजिटल एज। अब इस सेंटेंस से आई एम गिविंग एन इंप्रेशन व्हाट एम आई डूइंग हियर ऑन लिंक्डइन, मेरा यहाँ पे गोल क्या है, and I mentioned an email ID via which people can connect with me. I mentioned all the logos of all the organizations that I've worked previously or I'm working currently, right? So this gives an impression. For example, Marsh McLennan is the largest risk consulting firm in the organization in the world. So वहाँ पे वो impression जाता है, okay, that this person is has worked in a large organization as well, and there are some smaller organizations like iPlan and CBC. So these are small scale organizations. So small scale organization भी हैं and Fortune 500 companies में भी काम कर रहा है. So पूरा एक mix and match. Like you get to know that okay, this person has a diverse experience. अब हायरिंग जैसे मैंने मेंशन करा है, ठीक है। इफ यू लुक एट माय प्रोफाइल पिक्चर, इट्स अ प्रोफेशनल फोटोग्राफ इन सूट, येलो बैकग्राउंड वाइट। अब ये एक अलग चीज है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी थी। प्रोफाइल पिक के पीछे यू माइट हैव नोटिस वेरियस पीपल हैव येलो बैकग्राउंड। उसका लॉजिक क्या होता है, येलो अब पूरे पेज पे यहाँ पे एक सेक्शन अलग से दिख रहा है, दैट इज द प्रोफाइल फोटोग्राफ। व्हाई? बिकॉज इट्स येलो, इट स्टैंड्स आउट, हाईलाइट अलग ही हाईलाइट हो जाती है वो चीज, ठीक है। ग्रीन पर्पल कुछ नहीं करेगा वो, बट येलो डज दैट थिंग।
feedback link post again, can't see. Okay. Feedback link post कर दिया है फिर से. You guys can upload, fill that. And Ayush, अब यहाँ पे जैसे if you see that I've mentioned founder, Edzer, Ed Merchant, Change Matters, ex budding analyst, ex March McLennan. अब मैं सारी organization mention नहीं करी है, वो सब मेरे banner पे भी आ रही है, नीचे भी आ रही है. I've kept it short. ठीक है? Talks about finance, startups, marketing, leadership, career development. Just 5 things that I talk about. वहां से यहाँ से पता चल गया that अब मेरे लिए relevant audience कौन सी है, तो they can connect with me. ठीक है? नीचे जाओ आयुष. These are all the pages that I've been featured on. ये सब featured में आ जाएगा. Celebrate, Change Matter, Spotify, investing.com, जहाँ जहाँ पे मैं कभी भी फीचर हुआ था, ब्लूमबर्ग, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो जाती है. और भी आगे अभी बाद में ओपन अभी नहीं करना, नीचे जाते हो, कोई टाइम नहीं है. अबाउट सेक्शन ओपन करो. ठीक है? सो अबाउट सेक्शन आई केप्ट इट वेरी शॉर्ट, 4-5 sentences, 6 sentences, एंड उसमें सारी चीजें कवर हो रही हैं. ठीक है? So it's concise, yet it's very detailed. So I mentioned about me. So likewise, we have to mention about you. Also mention your skills. I mentioned like the top skills that I'm good at. नीचे, likewise, you can mention that in your about section. नीचे जाओ आयुष. अब या just wait. यहाँ पे see more पे click करो, founder पे. Edzer पे see more पे click करना, आयुष right side पे. ठीक है? अब ये एक description I'm just going to show. There are multiple experiences that I've mentioned on my LinkedIn profile. So likewise, अब किसी ने भी अभी तक हमने जो भी 3-4 profiles open करी, किसी ने अपना description mention नहीं करा. So no one who's going to come to your profile is going to get an idea about what do you do, what are your like responsibilities that you've worked on in your previous work experiences. So वहाँ पे वो सब चीजें mention करो. ठीक है? ऐसे पॉइंटर्स में स्टार्ट विद द वर्ब लाइक कंडक्टेड, ओवरसॉ, मैनेज्ड, लेड, प्रोवाइडेड, सिंगल सिंगल लाइक वर्ब से मेंशन करके इन अ सिंगल पॉइंट मेंशन दैट. लाइकवाइज यू कैन डू अदर थिंग्स. नीचे जाते हो आयुष. अब यहाँ पे सारे एक्सपीरियंसेस आते जाएंगे. ठीक है? मेंटर फॉर 11 years, बडिंग एनालिस्ट 3 years, मार्श मैक्लेनन 2 years, सब नीचे नीचे ये आता जाएगा. ठीक है? Education, अब यहाँ पे like I did my MBA from LPSIM, so I mentioned that I was a part of their 3 clubs. यहाँ पे निवेश, I was investment head at निवेश, वो सब mention कर दिया मैंने यहाँ पे MBA पे, what I learned during my MBA. I've also mentioned the things that I learned during my graduation. नीचे जाओ आयुष. स्कूल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, स्कूल का पुराना हो जाता है, so you can skip that, but college, post grad, whatever it is, वहाँ पे mention जरूर करो. नीचे जाओ आयुष. Licenses and certifications you can mention. नीचे जाओ. Projects, if you worked on any projects, so like I've taken नीचे जाओ. So I worked on around like 18 projects, so I mentioned there. So ऐसे ही you can mention any projects that you guys have worked on. नीचे जाते हो, skills आ जाएंगे इसके बाद. So you can mention all your skills. And last, नहीं open नहीं करना है यार अभी. ठीक है? वो skills हम दिखा चुके हैं 3 बार. बैक करो. ठीक है? Skills mention and recommendations as I showed you. अब यहाँ पे recommendations में 2 आ जाएंगे, received and given. ठीक है? If I've given recommendations, तो वो भी यहाँ पे show हो जाएगा. Received में मेरे अपने recommendations यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है? So बहुत simple था LinkedIn profile build करना. Hey everyone, thank you so much for watching. I hope you learned something new today. For more such content, like, share, and don't forget to subscribe.